So the problem is what we are going to do is the issue is that Claude has made a management report. Okay, now, from the raw data. Right, so I get this here data here, raw voucher data. So we fed this raw voucher data here, which is here. This data we fed it. ठीक है ना, ये हमने पूरी की पूरी फाइल दे दी थी. So with the raw ledger, which is with your team, we gave it to Claude and we asked it to do a financial summary. So based on that, it has made certain P&L, log and cash flow reports. You can it has made the complete cash flow report and so forth. Now, what we need to understand is that what, whether these numbers are fine or not fine, because this report is what he would actually see. And this is what a chartered accountant would see, right? So let's try and see whether these numbers that Claude is derived based on these documents. So we have put in these documents also in the Claude. This is the project. So within this, we have put in this business logic. Now, you might have to do some iterations, but let's see after the first iteration whether this thing matches or doesn't match. So 22F4 to this thing. So I go down to tally here and I pick up 1st April and then I look at my profit and loss account. Sorry, dear, profit and loss account. And at the period I changed to 1st April to 30th, 4th, 2024. So my number is 478,44,166. In terms of the sale, 478,44,167 and his is 166.84. ये एक थोड़ा सा problem है. Let's see what is the purchase accounts. 457 is the cost of goods sold. क्योंकि इसमें कोई वो नहीं था, item entry नहीं था. 45708. Let's see, 45708, 358.29. तो उसको सही calculate किया based on this business logic, right? And the gross profit of the margin ये कहते हैं. Then it goes on to 2024-04-05. ठीक है, मैंने period change किया. It's in 1st, 5th, 2024 to 5th, 2024. अभी तक क्या 441,18,820, 441,18,820 और इधर आया 353,29. इसमें देखें कितना आ रहा है, दोनों मैच करें. ठीक है ना. So now when I export this report from Tally, yes, yes. So yeah, I say Excel as right and I export. So this is the Claude output, and this is program files. This is this output.
ये परचेज है ना, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, नेट प्रॉफिट ले रहा, तो ये प्रॉब्लम है कि कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू नहीं डाली थी ना इसमें, वो थोड़ा डाला है। और चल इन्वेंट्री का भी डालना पड़ेगा। ओके, तो ये परचेज अकाउंट वाला 664,78,338। है ना, ये तो पूरा मैच कर गया। अब हम कैश फ्लो पे चले जाए। इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इसमें कितना है टोटल? 718,7919। 74,846, 7486। आउटफ्लो is 74,86,131। ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जुलाई का ये डिफरेंस आ गया ना 4,500। जबकि ये रिपोर्ट जो है वो कौन से महीने की है, कौन से टाइम पीरियड की है? अगस्त 2020 जुलाई 2025। सेवन टू एट सिक्स वन टू 904। What's the difference of there? 74,84,3304। मैच तो करना चाहिए, ये क्यूमुलेटिवली मंथ का जो है ना, ये मैच करके जो है ना, ये आना तो चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट केस है। फिर बैंक अकाउंट समरी, डीबीएस सी एच की भी उस लेजर पे आ जाओ। ओपनिंग और क्लोजिंग अप्लाई ना इसकी। टोटल एचकेडी में इतना मिला, पेड इतना, नेट पोजीशन ये।
पहले कैश फ्लो का देखिएगा 2024 में कितना होगा कैश फ्लो कितना मुनाफा तो इसलिए मैच कर पाएगा चलिए मैच करेगा और बस अगर ये मैच करा तो बैंक अकाउंट समरी भी मैच करेगा ना 200 अरे अरे अभी ये देखना पड़ेगा भैया कि कैसे इसने किया है